Right to vote is a fundamental right, is a legal right, or it is a constitutional right. What kind of a right is it? In this video, I'm going to clear this doubt for you all. I'll endeavor to clear this doubt for you all, which has been prevailing for a long time. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. Now, we will consider the different kind of rights that are there. As I mentioned earlier, fundamental right, statutory right, constitutional right. तो राइट टू वोट इनमें से कौन सी चीजों में फॉल करता है, कौन सा राइट है, वी विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस वीडियो. इससे पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये इंडिविजुअल राइट्स होते कौन से हैं. नाउ फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स दैट हैव बीन लेड डाउन इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अगर कोई वायलेशन होता है ऐसे राइट का तो द इंडिविजुअल कैन अप्रोच द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट फॉर द सेम. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए होते हैं बट दे डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पार्ट 3. वो पार्ट 3 के अलावा कहीं दिए होते हैं, बिकॉज पार्ट 3 अगर आप देखेंगे इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 हैज बीन द पार्ट दैट हैज बीन स्पेसिफिकली earmarked for the fundamental rights. So पार्ट 3 में सारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं. उसके अलावा जो भी राइट्स हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं. Why constitutional rights? Because we can seek the enforcement of those rights before the courts. Now statutory rights are those rights जो किसी statute, किसी law में given है, not in the constitution. You can call them non-constitutional rights as well. So ये वो rights हैं जो किसी law में given है and constitution का part नहीं है, and उनकी enforcement के लिए for getting them enforced what we have to do is that we have to refer to the law and we have to see the body that has been prescribed for their enforcement. So these are the rights provided by the law made by the parliament or the state legislature. Now, what kind of a right is right to vote? Right to vote is a constitutional right. Now, whether it is so, we will understand through this slide. Now, Article 326 of the Constitution provides for adult suffrage. What does it say? That a citizen of India who is aged above 18 years and is not disqualified under law is qualified to be a voter. He can vote. A person who's a citizen of India 18 साल की उम्र में वो वोट कर सकते हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आर्टिकल 326 में गिवन है, एंड क्योंकि ये आर्टिकल 326 में गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, देयरफॉर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. नाउ लेट अस लुक एट right to vote, whether it is a statutory right or not. Now, representation of people's act enact किया गया था 1951 में. Therein it was said that under article 62 that a person has the right to vote on fulfillment of certain conditions. Now this representation of people's act is an act of the parliament. It has been made by the parliament. It is a law created by the parliament. Then under that particular circumstance it is a statutory right because it is coming out of a law made by the parliament, therefore it is a statutory right. तो अगर हम देखें, right to vote can be termed as constitutional as well and statutory also. अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखें, लेट अस लुक एट व्हाट आर द जजमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन दिस पर्टिकुलर एरिया राइट टू वोट को लेके. 2016 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जहां पर ये बोला गया है स्पेसिफिकली दैट राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. देन अनदर केस pertains to Kuldeep Nair versus Union of India. This case was decided by a larger bench and it held that right to vote is a constitutional right. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो आज की डेट में राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. अब नाउ right to vote is not a fundamental right, even though there's a lot of debate that is happening कि right to vote को fundamental right की कैटेगरी में डालना चाहिए because it is a kind of expression under article 19(1)(a) जो बात करता है हमारे freedom of speech and expression की. right to vote, हम किसको वोट करना चाहते हैं, it is an expression of a feeling that who should be our leader. तो
तो इसको लेके काफी डिबेट है अभी, बट प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि राइट टू वोट जो है वो प्रेजेंटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है। आई होप अब आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी एज टू व्हाट काइंड ऑफ अ राइट इज इट। If yes, then do hit the like button, subscribe to this channel if you are landing up on this channel for the first time, and bell icon दबाइए ताकि और आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच सके।